नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ब्रायन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो है आशा भोसले के बारे में। दोस्तों, आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ। वह एक भारतीय पार्श्व गायिका, व्यवसायी अभिनेत्री और टेलीविज़न व्यक्तित्व थी जिन्होंने मुख्य रूप से भारतीय सिनेमा में काम किया। दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में हृदयघात के बाद कई अंगों के विफल होने के कारण निधन हो गया। अपने बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानने जाने वाली उन्हें मीडिया में हिंदी सिनेमा की सबसे महान और सबसे प्रभावशाली गायिकाओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया था। 2013 में उन्होंने फिल्म माई में एक अभिनेत्री के रूप में अपना प्रदर्शन किया और अपने अभिनय के लिए समीक्षक से प्रशंसा प्राप्त की। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। As a person and as a singer, I love to try something new. I like challenges. I have always been rebellious, but that is because I wanted to do different things, try out new things. I never think about the past. Why waste time thinking about something I cannot change? I believe in destiny and the philosophy of karma. I prefer selective memories. I prefer films and dramas based on families and relationship films which focus on love and harmony. I like to meet new people and learn about their cultures, new cultures. I have sung as many as 6,000 songs of various hues, be they classical, pop or folk songs. I have even performed free of charge for the Maharashtra government. I have sung every song with the same dedication like I sang my first number. Many policemen have not completed their education and the university can help them on this front. Education will enable them to speak well and politely to the people. सोचता हूँ हर कागज़ पे तेरी तारीफ करूँ, फिर ख्याल आया कि कई पढ़ने वाले तेरे दीवाने ना हो जाए। Girls are so shameless. Hey Ram, look at the size of her top. She's showing so much skill. दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और महफिल में रौनक आती है दोस्तों के आने से।